Live from New Delhi, you're watching DD India. News are India's voice to the world. I'm Ramesh Ramachandran. Coming up in the next hour. IMF applauds India's economic performance, terms it a star performer, contributing 16% of global growth, projects the country's economy to grow 6.3% in the current fiscal. India's Prime Minister Narendra Modi speaks to his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu. PM Modi emphasizes on an early and peaceful resolution of the Israel-Hamas conflict. Yemen's Houthis threaten more attacks as US announces a multinational force for freedom of navigation in the Red Sea and Gulf of Aden. And rescue efforts on after a 6.2 magnitude earthquake claims at least 127 lives in northwestern China. The International Monetary Fund has hailed India's growth story. It says that the country's economy is projected to grow at 6.3% in the current fiscal and the next. It noted that India's digital public infrastructure and strong government infrastructure program will continue to sustain its growth. DD India's Mihir Maikuri reports from New Delhi. To become the world's third largest economy by 2030, some experts even say it can happen early also. The International Monetary Fund, in its Article 4 consultation report, praised Indian authorities for the country's economic resilience and growth amid global challenges. We think that we will do even better than what the IMF thinks. Now, what is driving this growth? Well, a lot of factors are driving this growth. There's the services sector is doing reasonably well, but there has been a significant acceleration of the industrial sector recently, which you may be aware of. And also a lot of investment that is happening. So, of course, government investment, but we are also now seeing a significant amount of corporate investment and household investment also coming through. In its report, the IMF noted that India has emerged as a star performer, projected to contribute 16% to global growth. India's economy has rebounded strongly from the pandemic to become an important driver of global growth. India is on track to become one of the fastest growing major economies in the world this year, underpinned by prudent macroeconomic policies. IMF credited India's digital public infrastructure and strong government infrastructure push for sustained growth. It also praised India's near-term fiscal policy and RBI's proactive monetary policy actions. The Indian economy will grow 6.3% in financial year 2024 and financial year 2025 on the back of macroeconomic and financial stability. Inflation has moderated after a brief surge in summer driven by vegetable prices. Core inflation is projected to ease to 4.7% in financial year 2023 to 2024 from 6.1% in previous year and to converge gradually to 4% over medium term. IMF agreed that RBI's current neutral monetary policy stance is appropriate to gradually bring inflation back on target. Employment has surpassed pre-pandemic level, and while informal sector continues to dominate, formalization has progressed. I think India is already the driver of growth. The country is ready for a big leap. My own feeling is 8% growth is easily doable, but we can achieve 9% if the private sector joins us. Given that we are growing at this strong pace, which is the wide gap between where we are growing and the rest of the world is struggling to grow. There's stuttering growth everywhere. India is galloping ahead. This wide gap that we have easily would position India in a very polar position. Following the release of the latest IMF report, Indian Prime Minister Narendra Modi said, and I quote, "India's rapid economic growth is not only helping its citizens, but is also helping the global economy." John Thomas Chambers, the former executive chairman and CEO of Cisco Systems, said on X, and I quote, that India will become #1 economy. Meanwhile, rising tax revenue in India indicates strong economic growth for the nation. Gross direct tax collections for financial year 2023 to 2024 registered a growth of 17.01%.
Net direct tax collections for financial year 2023 to 2024 grew at over 20.66%. Advanced tax collections for the financial year 2023 to 2024 showed growth of 19.94%. The Indian economy is growing faster than any major economy and is becoming a top investment destination. This is likely to crowd in more investment and create more jobs over the coming years. We get a lot of support from the government in the forms of policy making. So, for example, the whole digitalization, the build-up of infrastructure, there are improvements on taxation that is really making ease of business, and that we have seen now over the past years when we have been operating. We are taking the learnings and we are in a phase of planning for the next. India is a growth market and a very important market for IKEA. The government's massive spending on infrastructure has given a huge boost to the growth potential. Mihir Makuri reporting for DD India. So where the report said, an IMF report has said that India is projected to contribute more than 16% to global growth. It also says that the country has emerged as a star performer. DD India's Jessica Taneja spoke to Robin Burgess, a professor of economics at the London School of Economics, about what's driving India's economic engine. Take a listen. How do you look at India's economic growth in the future? It's going to be the third largest economy. It's projected to become the third largest economy. It's still pacing. And what more do you think India needs to do to have more reforms? It already expressed that there have to be certain multilateral institutions that need reformation, including the United Nations, in order to be able to address the needs of the emerging economy, aka the global south as well. India has taken a stand at that point, but with its economic engines now working in full capacity, what do you think would aid that growth? I think there's a couple of broad areas. One is this very simple transition from agriculture into services and manufacturing. And that is obviously a source of growth because people become more productive. But I think the bigger factor is once they move out of agriculture into some form of firm, India has been successful in having a huge mass of small firms and then some big firms. And there's going to be a need for sort of some of those small firms to be encouraged to grow, to become bigger firms. And that sort of, people talk about infrastructure, they talk about regulation, but that sort of, I guess, encouragement of entrepreneurship is going to be a big factor. India's Prime Minister Narendra Modi spoke to his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu. In a tweet, PM Modi said, and I quote, "Had a productive exchange of views with PM Netanyahu on the ongoing Israel-Hamas conflict, including shared concerns on the safety of maritime traffic, highlighted India's consistent stand in favor of early restoration of peace and stability in the region with continued humanitarian assistance for the affected," unquote. In the ongoing winter session of India's parliament, legislative work was conducted on Tuesday despite disruptions in both houses. The Lok Sabha, or the lower house of the country's parliament, passed the National Capital Territory of Delhi Law's Special Provisions Second Amendment Bill 2023 and the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. Indian Parliament resumed proceedings on Tuesday despite disruptions in both houses. Important legislative works were undertaken. The lower house of the Indian Parliament, implies Lok Sabha, passed the National Capital Territory of Delhi Law's Second Amendment Bill 2023 by voice vote after discussion. The legislation introduced on December 13th by India's Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri, the bill seeks to extend the validity of a central act addressing unauthorized colonies and slum relocation. 40 lakh people will benefit from the Malikana Haq, the authorization of or dealing with unauthorized colonies. There are still some sections which were not covered in the original list, but which we had promised to sequentially take up after this process is complete. About 40 lakh there, sir. Jahan Jugi, Wahi Makan, another 10 lakh of our citizens, that makes it 50 lakh, sir.
Apart from this, the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 passed in Lok Sabha. Taxpayers who have filed their cases in different high courts or the Supreme Court will be able to withdraw their cases and approach GST appellate tribunals once the benches are operational. Recommendations of the GST Council and the effective rate of change is also decided by the Council, and then it is synchronized between the centre and the states. So that's the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only, therefore, for these customs and excise duties that we need it. So I appeal to the House that this temporary provision, which gives me the provisional power to collect taxes. The three bills to replace the three existing Indian criminal laws, the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Saksha Bill 2023 have been taken up for consideration and passing in the Lok Sabha. The bills were amended following discussions by the Parliamentary Committee. Another 49 Lok Sabha MPs were suspended from the House for disrupting proceedings on Tuesday. This has taken the total number of MPs suspended this session to 141. Rahul Upadhyay's report for DD India. And shifting focus to the Indo-Pacific now, North Korea's leader Kim Jong-un threatens more offensive actions to repel what he calls increasing United States-led military threats. Kim's statement suggests that he is confident in his growing missile arsenal and will likely continue weapons testing activities ahead of the 2024 U.S. presidential election. The U.S. and its allies have responded by conducting a joint military exercise and activating a real-time system for sharing data on tracking North Korean missiles. South Korea is carrying out a joint military exercise with the U.S. amid high tensions on the Korean peninsula following Pyongyang's missile launches. The drills, which began on Monday, will continue for 2 weeks. It coincides with an announcement by South Korea, Japan and the United States to fully activate a trilateral real-time system for sharing data on tracking North Korean missiles. South Korea, the United States and Japan have officially launched real-time sharing of the North Korean missile alert system today and jointly formulated a multi-year trilateral training schedule. The collaborative achievements achieved today are expected to usher in a new era of security cooperation among the three countries. The three countries will continuously strengthen the trilateral cooperation in the Indo-Pacific region, encompassing the Korean Peninsula and beyond, to ensure peace and stability. The announcement came a day after North Korea test-fired a long-range missile to protect military moves by the US and its allies. South Korea's President Yoon Suk-yeol warned Pyongyang against its provocation. The North Korean regime will come to realize such provocations will only bring greater pain to itself. And regarding North Korea's missiles launched this time, the smooth operation of the information sharing systems has been confirmed. With a recent meeting of the South Korea-US Nuclear Consultative Group held in Washington last week, the establishment of a comprehensive extended deterrence regime between the US and South Korea is imminent. It signifies the substantive realization of a robust nuclear-based alliance between the two countries. Meanwhile, some new developments have taken place in South Korea. South Korean President Yoon Suk-yeol picked on Tuesday the former Vice Foreign Minister Cho Tae-yul as the country's new foreign minister and National Security Advisor Cho Tae-yong as the new spy chief. International troops stationed on the South Korean side of the truce village of Panmunjom on the border with North Korea, who had been unarmed, can resume carrying guns, the United Nations Command, UNC, said on Tuesday. The US-led UNC is a multinational military force in the heavily fortified, demilitarized zone between the two Koreas. For its part, North Korea says that it launched the two missiles to gauge the war readiness of its nuclear force against mounting US hostility. Bureau Report, DD India. As part of democratizing e-commerce, on Tuesday, ONDC and Meta announced a partnership to train and skill small-scale entrepreneurs from across India
to give them a platform for showcasing their products and expand their reach globally. ONDC, or Open Network for Digital Commerce, is a private non-profit company set up by the Government of India. DD India's Dibyendu Mondal spoke to the ONDC's Chief Business Officer on what this partnership will entail. Take a listen. ONDC and Meta has entered into a partnership to provide small entrepreneurs from Tier 2 and Tier 3 cities a platform to reach to the global level. And to talk more on this, I'm joined by Shirish Joshi. Welcome to Doordarshan, sir. He is the Chief Business Officer at ONDC. Sir, at the outset, let me ask you what this partnership entails, both for you as well as for Meta. Sure. For both of us, there is a common purpose, which is to help people at large access resources and facilities. ONDC's goal is to democratize e-commerce, so to ensure that any seller of any kind is able to find a way to do digital commerce. Meta's goal is whatever their communities need in terms of whichever access or service, they're able to provide that. So with this meeting of minds, the purpose of this MOU, it's not a partnership, it's an MOU. And what we've jointly agreed to do is create a program whereby we can enable millions of small businesses to become part of the ONDC network. Well, how are you going to achieve this? Will it be, what kind of MOU is it, if you could help us understand? So one part is that there is a lot of training capability at Meta, and so what they want to bring into bear is a program whereby they can educate sellers on how to do digital commerce and do it effectively. So the training capability is one part of the program. The other is related to Meta platforms are partners, technical partners, who can build bridge tools. And so there is a discussion on for bridge tools with WhatsApp, whereby a seller should be able to use those tools and be able to become part of the ONDC network by using something he's very familiar with and something that is easy to use, versus downloading a new software and trying to come to understand a new piece of application. Well, thank you so much, sir, for giving us those insights about India's digital journey, and perhaps we can grow further from here where we are standing right now in the next coming 5 years. This is Dibyendu Mondal with camera person Piyush from New Delhi for DD India. And still to come on DD India News Hour. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin announces the creation of a multinational operation to safeguard commerce in the Red Sea. And Russia's Prime Minister Mikhail Mishustin meets Chinese Premier Li Qiang in Beijing. India that invents. India that innovates. India that excites. India that invites. Land of possibility. Teeming with opportunities. Watch India Ideas each Thursday, 8 p.m. only on DD India. You're watching DD India News Hour. I'm Ramesh Ramachandran. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin visited the U.S. Navy's headquarters in West Asia. He announced the creation of a multinational force to safeguard commerce in the Red Sea. The measure follows a series of missile and drone attacks by Yemen's Iran-aligned Houthis. Operation Prosperity Guardian has been welcomed by Israel. Countries identified by the U.S. to join the security group include the UK, Canada, France, Bahrain, Norway, and Spain. Meanwhile, Britain warned that security situation in the Red Sea was worsening and ballistic missile and drone attacks were an increased threat as it agreed for a Royal Navy destroyer to join a US-led operation to safeguard commerce in the region.
The United States said on Tuesday it was setting up a task force of ships to protect shipping in the Red Sea and Gulf of Aden, key trading routes, to protect shipping from the rising number of attacks launched by Houthis in Yemen. The Houthis have stepped up attacks, forcing oil major BP and freight firms, including Maersk, to avoid the area. Britain's Ministry of Defense said on Tuesday that HMS Diamond, which shot down a suspected drone in the Red Sea on Saturday, would join the US-led international task force as it warned of the rising threat levels. Meanwhile, Yemen's Iran-aligned Houthis said that they would press on with attacks in the Red Sea and could mount a naval operation there roughly every 12 hours. Russia's Prime Minister Mikhail Mishustin is in China. Mishustin met Chinese Premier Li Qiang in Beijing as part of his two-day visit. He was expected to call on President Xi Jinping. The visit is significant as Beijing is keen to expand energy cooperation with Russia along all stages of production. Both nations sign an MOU on cooperation in anti-monopoly, anti-unfair competition and advertising. Russia summoned Finland's ambassador on Tuesday to express its concerns over a new defense agreement between Helsinki and Washington, D.C. Russian officials informed the ambassador that Moscow would take necessary measures to counter the aggressive decisions of Finland and its NATO allies. The measure comes in response to the growing NATO military presence near the Finland-Russia border. Meanwhile, President Vladimir Putin of Russia has said Russia would be prepared to talk to Ukraine, the United States and Europe about the future of Ukraine if they wanted to, but that Moscow would defend its national interests. Putin, who sent troops into Ukraine in 2022, has repeatedly said he would be prepared to talk about peace, though Western officials say he is waiting for the US presidential election in November before making a genuine effort. Putin spoke at a meeting of the Defense Ministry, which was attended by the military top brass, including Defense Minister Sergei Shoigu and General Valery Gerasimov, Chief of the General Staff, as well as Federal Security Service Director. President Putin also said that Moscow is upgrading its nuclear arsenal and keeping its strategic forces at the highest level of readiness as the West wages a hybrid war against it. He said Moscow would continue its special military operation in Ukraine and all attempts to inflict a strategic defeat on Russia had crumbled. Overall, the level of modern weaponry in the strategic nuclear forces has been brought up to 95%. When it comes to naval forces, it's almost at 100%. By the end of the year, 15 yards and avant-garde missile complexes will be deployed for services. We need to continue maintaining combat readiness of the strategic force at the highest level. All the approved goals in this area will be reached without a doubt. For his part, Russia's Defense Minister Sergei Shoigu said that Russia has increased production of tanks by 5.6 times since the start of what it calls a special military operation in Ukraine. Shoigu said that Moscow planned to boost armed forces to 1.5 million service personnel. He said Russia had laid 7,000 square kilometers of minefields along the 2,000-kilometer front line in Ukraine. Since February 2022, meaning the start of a special military operation, tank production has increased by 5.6 times. Infantry fighting vehicles by 3.6 times. Large-scale goals on fortification equipments on line of defense are accomplished. Along front line that is more than 2,000 kilometers has been laid 7,000 kilometers of mines. And DD India's Dasha Chernyshova has more from Moscow. Take a listen. Russia's Minister of Defense Sergei Shoigu says that Moscow is increasing defense sector production and will boost army to 1.5 million people. That is proportionate to the external threats, he said. He also specified that in response to Finland's and Sweden's decision to join NATO, Moscow is forming Leningrad and Moscow military districts.
Speaking to the military officials on Tuesday, Shoigu asserted that the Russian army is currently the most prepared and combat-ready force in the world. The experience of Russia's so-called special military operation in Ukraine, Shoigu said, proves that Moscow is capable of, quote, adequately and efficiently reacting to any actions of modern enemies. Shoigu said that 650,000 military got combat experience. Shoigu also outlined the priority tasks for the military in 2024, including continuing the operation in Ukraine until the goals are fully accomplished. Shoigu accused NATO military of controlling Ukraine's air defense complexes, operational and tactical missiles, and multiple launch missile systems. The minister also said that the Russian equipment was tested in real life and demonstrated its superiority over the Western analogs. Dasha Cherneshova reported in Moscow for DD India. Moving on to Asia now, a magnitude 6.2 earthquake struck one of China's poorest regions just before midnight local time on Monday, killing at least 127 people, injuring hundreds, and bringing down mud houses in remote villages that never stood a chance. Chinese state media reported that in a village called Dahi, one of the worst hit areas in China's northwestern Gansu province, many houses were either at risk of collapse or had already crumbled to the ground, especially homes built from earth and clay. More than 155,000 homes in Gansu were either damaged or destroyed. Authorities have mobilized an array of emergency responses after the quake wrecked roads and infrastructure, triggered landslides, and half-buried a village in silt. But rescue work has proved challenging in sub-zero temperatures after a powerful cold snap swept across the country. China's deadliest quake in recent decades was in 2008 when one of magnitude 8 struck Sichuan, killing nearly 70,000 people. Now, flood, drought, wildfire and storm, they're all ravaging many parts of the world and displacing millions of people as environmental advocates raise concerns about impact of global warming. DD India's Aman Kumar Himanshu reports. The world is grappling with a series of extreme weather events, aggravating the impacts of climate change on a global scale. Unprecedented heavy rainfall battered various districts of India's southern state of Tamil Nadu and has brought regular life to a standstill in state's southern districts. The Indian Air Force, the Army, and other rescue teams are conducting relief operations. We have around 6 disaster relief teams formed with 1 boat each with 5 personnel, and it was sent to all across Tuticorin to provide rescue assistance. Our first priority is to serve rescue persons who are in need of assistance. All right, we are standing by for India's Prime Minister Narendra Modi's address to the participants of the grand finale of Smart India Hackathon 2023 via video conferencing. नमस्कार, मैं आज की स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की इस 7th एडिशन में देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। 48 सेंटर में बैठे हुए हमारी सभी टीम प्लेयर्स, टीम लीडर्स,
सभी को मैं आज की हैकाथॉन में स्वागत करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में 2017 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की परिकल्पना होती है। देश की नई पीढ़ी की उन्नत विचार को देश की विकास की काम पे जोड़ने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी निरंतर उसको लीड कर रहे हैं। आज हम सभी की सौभाग्य है उसी की 7th एडिशन में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए हैं। इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो चैलेंज हो रही है उसमें 2,67,000 पार्टिसिपेंट हैं। मित्रों, इस हैकाथॉन की अगर थोड़ी सी इतिहास रखा जाए, 2017 में 7,531 टीम बने थे। आज उसकी 6 गुना वृद्धि होके 6 टाइम ग्रोथ होके 44,617 टीम बने हैं। 51,000 आइडिया, यही तो उद्देश्य है हैकाथॉन की। देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 51,000 नए आइडियाज की आज प्रतियोगिता होगी। आने वाले कुछ दिन तक इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य है भारत को विकसित करना। 2047 तक भारत को विकसित बना के हम सब रहेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस आह्वान को दिए हम लोगों के सामने। हम उस सभी लोग आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 सालों के बाद अमल में आई है। उसी के तहत देश में आज कई नई ऊंचाई हम छू रहे हैं। विश्व के हम 5 नंबर की बड़े अर्थनीति बने हैं। विश्व की सबसे ज्यादा नौजवानों की देश भारत है। भारत की नियति में आने वाले 2-3 साल के अंदर और एक लंबी छलांग लगा के हम विश्व की 3 नंबर इकोनॉमी बनने वाले हैं। मित्रों, हम अपने ही लिए ही जीते हैं, विश्व के लिए जीने वाले ये देश आने वाले दिनों में अपने उद्यमिता के आधार पे, अपने इनोवेशन के आधार पे, अपने नया व्यवसायिक दृष्टिकोण को दिखाते हुए, जब कुछ साल पहले हमारे पास कुछ चंद स्टार्टअप्स थे, आज लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की हमारी सफल नेतृत्व के कारण, मार्गदर्शन के कारण ये हो पाई है। मैं आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री समेत सभी अभ्यर्थियों को स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विनती भी क्या करता हूं, इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ऊपर एक छोटी सी फिल्म स्क्रीनिंग कराने के लिए। Innovations and technological advancements are the cornerstones of any developed nation. Realizing the importance of scientific breakthroughs, India, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken a quantum leap in the area of space exploration, pharmaceuticals, defense technology, and more. In the past few years, the Modi government has encouraged young minds of India to transform their innovative thoughts and ideas into sustainable solutions to realize the dream of Viksit Bharat at 2047. Smart India Hackathon is one such initiative that was designed to give the youth of India a platform where they can give wings to their vision. Through its 36-hour software edition and 5 days hardware edition, the platform has harnessed the power of young scientific minds and has improved the lives of common people through innovations. 2017 में जब से ये अभियान हमने शुरू किया है, तब से इसका निरंतर विस्तार होता रहा है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। In just 6 years, the Smart India Hackathon has witnessed a 7-fold increase in the submission of ideas. There has been exponential growth in the number of participating teams and ministries. Today, the hackathon has grown into the world's largest open innovation model and promotes ideation and entrepreneurship
through the use of science and technology. Let us hear some success stories where these innovations from one part of the country have changed the lives of people living across the country. मैंने स्मार्ट हैकाथॉन अटेंड किया। ऐसा प्रोग्राम इन फ्यूचर आगे में और होते रहने से हम जैसे छात्रों को नॉर्थ ईस्ट में और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। One such hackathon that I participated in 2019 was Smart India Hackathon. That is where I came to know the importance of how crowdsourcing innovation could lead to the new technologies that are coming up in different domains. We came up with this entire platform that helps millions of developers and organizations to come together and come up with the best of the solution. I was able to develop this product which can save surgery time by approximately 40%, and it is used for removing tumors and performing surgeries on blood vessels, and we are also going to start export from next year. We are very grateful to the SIH organizers and the AICT organization. This innovative instrument which can perform 4 actions together: holding the tissue, dissection of the surgery, sealing the tissue and sealing the blood vessels to control the bleeding, and then cutting. This actually helps the surgeon by reducing the operating time. We have developed a sustainable dam-proof bricks which is made entirely from 100% recycled waste material. With our solution, we are trying to solve 2 major problems of our country. One is of the single-use plastic waste and industrial waste, and second, the carbon-emitting brick industry. Today, we have delivered our products from Chennai to Srinagar. Thinking about innovation and startup is challenging, and that if you are a student, but SIH made that possible. हम एक छोटा रिसोर्ट बना रहे हैं, उसके अंदर में सीपेज की थोड़ी सी कुछ इशू आ रही थी। 200 बाथरूम्स के अंदर ये ब्रिक्स लगाई है, जिसके अंदर सीपेज 0 इशू है। Electromotion is a technology company which develops cutting-edge technologies in the field of smart mobility. Our USP is we convert the existing petrol and diesel auto rickshaws into an EV in just 2 hours. We have a mission to attain zero tailpipe emissions. Smart India Hackathon is the biggest foundation stone for the startup ecosystem in India, and it opens door for future opportunities as well. पहले मैं पेट्रोल का गाड़ी चलाता था, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बिठा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में इनकम है। Smart India Hackathon 2023 will continue the legacy of providing young students the opportunity to display their ideas and turn them into successful businesses. Smart India Hackathon, transforming country's technological landscape to realize the vision of Viksit Bharat at 2047. मित्रों, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की संवाद देश की 5 स्थान पे होने वाला है। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर कर्नाटक से 2 मेरे विद्यार्थी मित्र श्री शौकत दास और कार्तिक नारायण को इनवाइट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स। नमस्कार प्रिय प्रधानमंत्री। आप सभी यंग इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स के साथ बात करने का मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। मैंने दिन में भी अपनी टीम से आपके बारे में कई बार अपडेट लिया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन सीखने का अवसर मुझे भी मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा हो, आपसे संवाद जरूर करूं। आज भी आप सुबह से ही जुटे हैं, इसके बावजूद आपके चेहरे पर एक ताजगी है, एक उत्साह है। यही ताजगी, यही उत्साह, यही आत्मविश्वास नेशन बिल्डिंग की इच्छा शक्ति आज भारत की युवा शक्ति की पहचान बन चुकी है। मैं अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? Sir, I am Shoykot Dash. I am from Bangladesh and I am studying in NIT Trichy and I am representing and leading the team Ferrite Code. अच्छा, मुझे बताया गया है
कि इस सेंटर की टीम रेलवे कार्गो के लिए IoT बेस्ड सिस्टम बना रही है। आपके साथ बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स हैं। क्या आप मुझे अपने इस इनोवेशन के बारे में कुछ समझा सकते हैं? Sir, so what happens is that India has the 4th largest railway network in the world, sir. Or around 70 to 80% of all the coal in India is being transported through these railway networks. So because of that, underloading and overloading happens. That is, the train wagons is not being filled till the appropriate level. They're filled very low, or they're filled too much. बहुत fill किया तो the government will have to pay fine to the railways, and बहुत कम fill किया तो the cost will not be covered. We won't get proper proper, it won't be properly sold. So we'll have to find out ways to measure the weight of the train and reach the proper level. So we are using IoT and artificial intelligence based technologies by using ESP32 microcontrollers or Raspberry Pi modules. We use these to measure the weight of the wagons, keep track of all these weights, and to take appropriate actions based on these weights. And we'll also use 3D scanning techniques and to have a 3D model of the wagon and use artificial intelligence to predict the weight, so that this will be a much faster way. आपकी टीम में कितने मेंबर काम कर रहे थे? Sir, we are 6 members. 3 are from Bangladesh and 3 are others from India, different parts of India. Three are from Bangladesh. Yes, sir. Who is there anyone else who want to talk with me? Yes, sir. सर मैं शोइकत दास हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ एंड NIT Trichy में अंडरग्रेड कर रहा हूँ. एंड सर फर्स्ट आई वांट टू गिव ए appreciate of your initiative that Vikasit Bharat. I love it. I really love this idea. It's a great idea. Even I submitted my idea to make India the developed nation by 2047. Sir, our problem statement has been given by the Ministry of Coal, and the title is predicting, preventing the overloading and underloading of railway wagons, sir. अच्छा, मुझे विश्वास है आपके प्रयास से भारतीय रेलवे को बहुत फायदा होगा. इस समय भारतीय रेल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है. केंद्र सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है. हमारा बहुत बड़ा फोकस लॉजिस्टिक्स पर भी है. ऐसे में आपका इनोवेशन बहुत मददगार होगा. मुझे आपकी टीम में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को देखकर भी अच्छा लगा. हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी टैलेंटेड फॉरेन स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए भारत आए. जो फॉरेन स्टूडेंट्स भारत आकर अपनी हायर एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए हमने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है. मुझे बहुत अच्छा लगा. आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. आइए अगला ग्रुप कहाँ से है? अगला माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला ग्रुप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से है. मित्र आदरणीय हर्षिता और जेथवा, ये दोनों बात करेंगे. नमस्ते. नमस्ते सर, केम छो? आपने एवा नेवा. हाँ बताइए. सर हमारी टीम एजे पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से है. हमारी टीम का नाम है हाइब्रिड सिक्योरिटी. हमारी टीम के लीडर है पार्थ. हमारी टीम में है धार्मिक, जय, आयुष एंड जीत. हमारी टीम इसरो बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जय देंगे. नमस्कार सर. नमस्कार. सो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो है कि इसरो का जो मून लैंडर है, वो जैसे कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, वो बहुत सक्सेसफुली लैंड हुआ था. सो हमें इसरो ने जो अभी इमेजेस प्रोवाइड की है वो है मध्यम रिजोल्यूशन वाली.
सो वो इमेजेस को हम सुपर रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे इमेज प्रोसेसिंग और एआई की मदद से। सो वो जो इमेजेस हमें मिलेगी उस इमेज से हम हजार्ड मैप बनाएंगे, मतलब कि जो मून पे क्रेटर्स है और बोल्डर्स है वो सब कहाँ पे है और उसके हिसाब से हम कहाँ पे सेफ लैंडिंग कर सकते हैं वो मिलेगा हमें। और वो दोनों चीज़ों से हमें मिलेगा कि जो नेविगेशन पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे कि हमारा अर्थ से मून तक का जो पाथ है वो प्रोवाइड होगा कि कहाँ हम सेफली लैंड कर सके। सो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट है और हम SIH और इंडिया को थैंक यू कहना चाहते हैं ये चीज़ के लिए। आप लोग वहाँ कभी इसरो के लोगों से मिलने गए? इसरो में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनसे कभी चर्चा की इस विषय में, उनसे कोई गाइडेंस लिया, ऐसा कोई प्रयास किया क्या? सर एक बार मैं छोटा तब गया था इसरो पे और तब मैंने ये चीज़ें जानी थी यहाँ की और उसकी वजह से बहुत अच्छा फील हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ID में है तो हमें लगा कि क्यों ना यही हम चूज़ करें। देखिए जो स्टार्टअप वाले हैं, ज़रा आप एक बार ऑनलाइन जाएंगे तो काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो आजकल स्पेस में काम कर रहे हैं। जी सर। अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके नए नए आइडियाज़ वो इंक्यूबेशन और बाद में स्टार्टअप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। जी सर। और आप तो जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आज पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जी सर। चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर लैंड कराया। ये सफलता सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया है। दुनिया में ये भाव और सशक्त हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है। आप जैसे अनेक युवा साथी जो देश के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन टाइम पीरियड है। स्पेस टेक आधारित इकोनॉमी के लिए आने वाले दशक बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें भारत अग्रणी देशों में हो, इसलिए हमने बीते 10 वर्षों में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। युवा शक्ति को अधिक अवसर देने के लिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। हमने इसरो की फैसिलिटीज को युवा स्टार्टअप्स के लिए ओपन किया है। आज इन स्पेस जैसा संस्थान हमारे पास, और मैं आपको चाहूँगा कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर वहीं है, आप जरूर एक बार उन लोगों से भी मिलिए। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पेस साइंस तक सीमित नहीं है, इससे रोजमर्रा की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए स्पेस में जिसको महारत है वो निश्चित रूप से दूसरी टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट रो में रहने वाले हैं। चलिए, मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? अभी वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संबलपुर उड़ीसा के आदरणीय सैयद सिद्दीकी हुसैन माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। जय जगन्नाथ। सर नमस्ते सर। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ, जय जगन्नाथ सर। बताइए सर। मैं कुछ बताऊं अपने बारे में। इससे पहले मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा ये प्लेटफॉर्म हम तक पहुंचाने के लिए, जिससे हम अपने आइडियाज़ पूरे नेशंस के साथ शेयर कर सकते हैं। सर मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। मैं अपने कॉलेज गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ की एक टीम, हमारी टीम आर्कस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे टीम के मेंबर्स हैं अंकित, अध्यक्षा, दीप्ति, अनीश एंड देवाशीष। अच्छा, इस सेंटर पर टीमें बहुत से इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। यस सर। आप लोगों ने किन चीज़ों पर बल दिया है? सर हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया है, स्पेशली बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर।
और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था यानी मेनली बच्चों की मेंटल हेल्थ पर। यस सर। हाँ सर, हमने मेंटल हेल्थ को, बच्चों के मेंटल हेल्थ को ट्रैक करके उससे एनालाइज करके एक मतलब एक ऐसे रेटिंग बनाया है जिससे कि पेरेंट्स और डॉक्टर्स को पता चले कि बच्चे के मेंटल हेल्थ किस तरह है और कुछ बुरा होने से पहले ही उन्हें सूचना मिल जाए जिससे कि वो सही कदम उठा पाएँ। सर, आपने इसके लिए AI वगैरह का तो उपयोग किया होगा, लेकिन क्या फिजिकली इस प्रकार से बच्चों से बातचीत, उनका कोई टेस्टिंग, ये सब किया है क्या? सर, हमारे जो एप्लीकेशन जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें पेरेंट्स से भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि बच्चों के व्यवहार, खाने पीने के तरीके, खेलने के तरीके। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी जिससे हम उनके बारे में पता कर सकते हैं कि वो कैसे हैं। अच्छा, इतनी 3 बेटियां भी इसकी आपकी टीम में हैं, कोई बेटी कुछ बताना चाहेगी? नमस्ते सर। नमस्ते सर, हम ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको हम इस तरह से मतलब एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, जैसे कि ये हम AI यूज़ कर रहे हैं इस मतलब ये जो एप्लीकेशन में, और इससे हम वो जो भी मतलब वो बच्चा होगा उसको हम मतलब वो हमारा AI जो होगा उसको यूज़ करके हम एक सेफ्टी रेटिंग जनरेट कर रहे हैं 1 से 10 के बीच। तो अगर 5 से 10 तक अगर हमारा वो रेटिंग जनरेट होता है तो हम बस पेरेंट्स को एक मतलब नोटिफिकेशन या फिर अलर्ट करेंगे कि आपका बच्चा मतलब कुछ तो मतलब उसका जो व्यवहार है उसमें कुछ तो है, तो आप ज़रा ध्यान रखिए। अगर 5 से कम है तो हम हमारी जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें हम मेंटर सपोर्ट और जो एक्सपर्ट होते हैं वो पेरेंट्स को रिकमेंड करने वाले हैं कि आप मतलब अपने बच्चों को मतलब थोड़ा वो गाइड करेंगे। तो ये होने से मतलब काफ़ी वो पेरेंट्स को, उन बच्चों को और एक्सपर्ट्स को भी मतलब बहुत अच्छा एक ब्रिज बन जाएगी उन लोगों के बीच, तो वो उपकृत होगी इस चीज़ के बारे में। बहुत बहुत बधाई हो, आपका ये प्रॉब्लम एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। नौजवानों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शिक्षा मंत्रालय के भी ऐसी टीम्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है और ये पता लगाना चाहिए कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अपने स्कूल और कॉलेज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत के नौजवानों का मानसिक विकास उतना ही मजबूत हो। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है कि आपने विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने भी MyGov पर एक विशेष पोर्टल बनाया है, मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत नाम से एक और संगठन का निर्माण हुआ है जो देश की युवा शक्ति को दिशा देने का काम कर रहा है। आप भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आइए, अगली टीम कहां से है? अगली टीम आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से हैं। अभी AI टूल के माध्यम से, भाषिणी टूल के माध्यम से आदरणीय रेशमा माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। पहली बार हम भाषिणी टूल को इस प्रकार के संवाद में यूज करेंगे। वणक्कम। Vanakkam sir, I am Reshma Mashuda from Nada Saraswati College of Engineering and Technology, Tamil Nadu.
from Tamil Nadu, Theni. I आप am सबका representing स्वागत the है। team जरा Innovation Squad. अपने बारे में और अपनी टीम ने क्या काम किए जरा बताइए। देखिए, आप गुवाहाटी में आई टीम्स दक्षिण भारत से कई घंटों की यात्रा के बाद आप गुवाहाटी पहुंची है। आप सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के एम्बेसडर हैं। आप मुझे अपनी टीम के बारे में बताएं और आप किस प्रॉब्लम एरिया पर काम कर रहे हैं, आप किस प्रकार इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। इसकी जानकारी भी दे। Okay, sir. I am representing the team Innovation Squad. I am working with 6 of my teammates, Navin Bharati, Rubini, Sophia, myself Resma, Vigneshwar and Ashwin. And our problem statement is AI-based generative design of hydropower plant. We are going to give a generative design of components of hydropower plant. Our main motive is to get input from the users through our web application. Based on that input, we are going to generate a generative design of components of the hydropower plant. It will be very helpful to India become a self-reliant in energy, and it will reduce the dependency of the fossil fuel. We are using AI in backend, sir. हाँ, please go ahead. Okay, so we are using AI to generate to train our data set in backend, sir. We also went for a field visit Mullai Periyar Dam. On that hydropower plant, we collect some information about the components that are present in the hydropower plant. It is very helpful to develop our project. We gathered some data sets from that hydropower plant, and we are using that in our website, and it is integrated with the AI algorithms to generate a 2D design of the components of the hydropower plant, sir. आप जिस सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं वो विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पावर सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों भारत के फ्यूचर को शेप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के रास्ते हमें खोजने ही होंगे। पावर प्रोडक्शन के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन और कंजम्पशन की मॉनिटरिंग, इसमें भी एफिशिएंसी की बहुत अधिक ज़रूरत है। इसमें एआई बेस्ड सॉल्यूशन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस तरफ भी आपको जरूर सोचना चाहिए। बीते सालों में हमने हर गांव, हर परिवार तक बिजली पहुंचाने के लिए काम किया। अब हम खेतों में छोटे छोटे सोलर प्लांट्स हो, शहरों में रूफटॉप सोलर प्लांट्स हो, इस व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे जुड़ी एफिशिएंट सॉल्यूशंस पर भी युवा साथियों को जरूर काम करना चाहिए। वैसे मैं दक्षिण भारत से आए विद्यार्थियों से ये भी कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट आए हैं तो इस हैकेथॉन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की भी कोशिश करें। नॉर्थ ईस्ट के लोग आपसे बहुत गर्मजोशी से मिलेंगे। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
और मैं मानता हूं कि एआई का ये प्रयोग जरूर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। Really very thank you, sir. चलिए अब अगले सेंटर की तरफ चलते हैं। आप सबको वणक्कम। अभी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के मित्र ऋषभ एस विश्वामित्र माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। नमस्ते जी। Namaskara, Pradhan Mantri ji. It is an honor and a great pleasure to present to you a solution for detecting phishing domains using artificial intelligence and machine learning, which we have done according to the problem statement provided by the NTRO. So, I am Rishabh Vishwamitra. We are from Dayanand Sagar College of Engineering, Bengaluru. These are my teammates, Ashman, Anuj, Reema, Nanjunda, and Srinidhi. I am pursuing computer science and engineering, while my teammates are pursuing electronics and telecommunication, biotechnology, and computer science respectively. So phishing attacks are the most common form of cybersecurity attacks, where a person pretends to be a trustworthy entity and tries to extract sensitive and valuable information from the user. This is not something just the common man has to deal with, but also big companies. The current existing approaches to deal with this are methods like the blacklist approach, the rule-based method, and website signature-based approach. All of these are very single-dimensional and cannot keep up with the ever-evolving phishing attacks. That is why we have combined all these three methods using machine learning to harness the power of AI to continually learn from the phishing attack patterns, so we are well equipped to deal with future phishing attacks. ऋषभ, आप लोग तो जानते हैं कि ये बड़ा डायनेमिक क्षेत्र है। आप एक सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये बेईमानी करने वाले लोग दूसरा रास्ता खोजेंगे। आप दूसरा रास्ते पर काम करेंगे तो तीसरा रास्ता खोलेंगे, और इसलिए ये चोर सिपाही की लड़ाई जैसा एक लगातार नए नए इनोवेशंस करने पड़ते हैं, और उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें बहुत सतर्क रहना होता है। अगर इनका नियमों से इस्तेमाल हो तो ये बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो इससे बड़ी समस्याएं हो सकती है। आप सब जनरेटिव एआई से बन रहे डीप फेक वीडियोस के बारे में जानते हैं, जो एकदम देखने वाले को एकदम असली दिखते हैं। इसलिए हमें किसी भी वीडियो या फोटो पर विश्वास करने से पहले अधिक सतर्क होने की जरूरत है। भारत एआई को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दे रहा है, और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा नया चुनौती है। आप जैसे नौजवान जो इसमें काम कर रहे हैं वो जरूर आगे भी काम करते रहें। फ्रेंड्स, वाकई आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकेथॉन्स हुए उनसे मिले सॉल्यूशंस बहुत कारगर रहे हैं। हैकेथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं। ये स्टार्टअप्स, ये सॉल्यूशंस सरकार और समाज दोनों की ही मदद कर रहे हैं। ये आज इस हैकाथॉन में शामिल हुई टीमों, हजारों स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान,
और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। आज भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कोरोना के महासंकट के दौरान भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। भारत ने अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन भी की प्रक्रिया भी पूरी की और दुनिया के दर्जनों देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, आज यहां यंग इनोवेटर्स और अलग अलग डोमेन्स के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। आप सभी समय का महत्व समझते हैं, तय समय में लक्ष्यों तक पहुंचने का मतलब समझते हैं। आज हम समय के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारा हर प्रयास अगले 1000 साल के भारत की नींव को मजबूत करेगा। आप इस यूनिक टाइम को समझे। ये समय यूनिक इसलिए है क्योंकि कई फैक्टर्स एक साथ आए हैं। आज भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। साथियों, ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी है। हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव आज है वो अतीत में कभी नहीं रहा। स्थिति ये है कि एक टेक्नोलॉजी के साथ हम पूरी तरह सहज भी नहीं हो सके, तब तक उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है। इसलिए आप जैसे यंग इनोवेटर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल देश के साथ आपकी लाइफ को भी ये समय एक तरफ 2047 की तरफ की यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवनपूर्ण महत्व के महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने? आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। अब जैसे डिफेंस सेक्टर है, आज भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें सेमीकंडक्टर और चिप टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बनना होगा।
क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को लेकर भी भारत की एस्पिरेशंस बहुत हाई है। सरकार ऐसे सभी सेक्टर्स पर विशेष फोकस कर रही है, 21वीं सदी का आधुनिक इकोसिस्टम बना रही है, लेकिन इसकी सफलता आप युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें आप जैसे यंग माइंड्स पर टिकी है। दुनिया को विश्वास है कि भारत में उसे ग्लोबल चैलेंजेस का लो कॉस्ट, क्वालिटी, सस्टेनेबल और स्केलेबल सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे चंद्रयान मिशन ने विश्व की उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया है। आपको इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेक्टर्स में नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है। आपको देश की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिशा तय करनी है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का लक्ष्य देश की समस्याओं का समाधान और समाधान से रोजगार का निर्माण, एक ऐसे चेन को चला रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से देश की युवा शक्ति विकसित भारत के लिए समाधान का अमृत निकाल रही है। मुझे आप सभी पर, देश की युवा शक्ति पर अटूट भरोसा है। आप कोई भी समस्या देखें, कोई भी समाधान ढूंढे, कोई भी इनोवेशन करें, आपको विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसे हमेशा याद रखना है। आप जो भी करें वो बेस्ट हो। आप ऐसा काम करना है कि दुनिया आपको फॉलो करे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। There was Prime Minister Modi interacting with the participants of the grand finale of Smart India Hackathon 2023. Just to recap for the benefit of viewers, the hackathon is in line with Prime Minister's vision of a youth-led development. Now, Smart India Hackathon is a nationwide program to give students a platform for solving problems faced by government and industry alike. It was launched in 2017, and since then, Smart India Hackathon has become popular among young innovators. The last few editions, innovative solutions have emerged in different domains, and some of them stand out as established startups. Now, this year, the grand finale of the Smart India Hackathon is being held from 19th to the 23rd of December. More than 50,000 ideas were received from 44,000 teams, which is a 7-fold increase compared to the first edition of Smart India Hackathon. And more than 12,000 participants and 2,500 mentors will take part in this grand finale. The grand finale is scheduled to be held at 48 nodal centers across the country. The total prize money for Smart India Hackathon is more than $240,000. And each winning team will be awarded a cash prize of more than $1,200 per problem statement. The Prime Minister interacted with teams from Gujarat, Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, among others. Among the participants were students from Bangladesh as well. The students from Sambalpur and Odisha are working on a rating system for mental health status in children. The team from Gujarat is working in the area of space applications. Right, and with that, it's a wrap on this edition of DD India News. Let us know your thoughts on the news of the day
You can connect with us on Facebook, X and Instagram. You can also check out our website ddindia.co.in. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Ramesh Ramachandran. From all of us here in New Delhi, thanks for watching DD India News Hour.